Okay, so we are the live now. Let's start the session. So we have stopped, and yesterday we were talking about. My voice is audible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, So sir. yesterday we have stopped with propellant. So today we'll be going to talk about different types of rocket based on propellant, and then if time permits, we'll go for satellite launch vehicles. Okay. So the first type of rocket is solid propellant Propellant rocket. rocket. So propellant, you know already what is propellant. It is a combination of fuel and Fuel and oxidizer. fuel plus oxidizer, right? And if fuel and oxidizer both are solid, that will come as a solid propellant rocket. Now these are the earliest rockets which are powered by gunpowder used by Chinese, Indians, Mongols, and Persians as early as in the 13th century. At the present time, solid propellant rocket is still used for military armaments. Solid rocket has a bit difference comparing with others. What's that? In this, propellant used to be in the form of solid. Propellant used to be in the form of solid. Solid. What is propellant? Combination of fuel and oxygen, Oxidizer. Oxidized. right? Just a minute, guys. Give me a minute. Okay. Sir. Just a minute, guys. Just a minute. Okay. So, in the solid propellant, what will happen? Your propellant will be in the form of what? It will Solid. be in the Solid. form of, Solid. Solid. okay. Right. And in the olden day, like even you know your this Deepavali crackers, you use rocket. Now in that also, whatever you fire, na fire will come, something will burn. That is actually uses a gunpowder. What is a gunpowder? You can call it, and that is in the solid form. Your fuel is in the solid form. So there is also solid propellant. Okay, in your crackers, that rocket you purchase in Diwali, right? That one. Okay. So now let's talk about what are the components of solid propellant rocket. So if your rocket is based on solid propellant, what are the components will be there? Nose cone, casing, insulation layer, propellant, igniter, and nozzle. Okay. Now first one. What is the first one? First one is casing. Casing. Okay. So you can see this casing is basically, this is the first layer used to protect the rocket engine from the surrounding. See, the thing is, you will be having a rocket engine, right? So when the fire will happen, it will This is become the first layer. what will happen? Temperature will increase. Temperature will be very high in the engine region, in the part of the region of the this rocket engine where the engine you fix na, there fire will happen na in the combustion chamber. The temperature will be very high. You know, because of that, what will happen? The material through which it is made of, that is also get heat up. So maybe that heat can transfer. So in order to stop that, because heat should not transfer. If heat will get transfer, we will not get proper thrust, because we have to move forward with high thrust. So if your heat get lost, what will happen? You will not get a proper amount of thrust. So you have, in order to get the proper amount of thrust, so fire should be in the one direction. It should not be having loss. So in order to that, like we'll be using a casing. So what casing do? Will not allow heat from inside to outside and outside to inside of the rocket engine part. Okay, it's like a thermos bottle. In thermos, what will happen? If you keep cold water, it will be for long time, it will be cold. If you keep hot water, it will be long for hot. What will happen? There is a form will be there, right? So that form will not allow to go heat outside and come that heat inside, right? Guys, please mute yourself, okay, when you are not speaking. Otherwise, it will create disturbance. Okay. So what casing do? It will not allow your heat from the outside, from the surrounding to inside,
and from inside to outside. Is it clear? Yes, sir. So that is the purpose of casing. Okay. Sir, what it's made up of? It is a different material. Okay. Like see, if you are talking about, like, see, different part is made of different material. So like heat should not transfer. Definitely, it should be a high temperature material. Okay, or it may be composite material also, which can absorb more heat. Okay. Now here you have something is called insulation layer. What is that? Yeah. See, there is a difference between casing and insulator. So you have seen Insulation case. layer. See, casing is what? Like, see, when your final rocket is ready. So now the thing is, every part will be assembled, right? Now you have to do the final shape, smoothing. What do you have to do? Smoothing. Because if the smoothness is not there over to the rocket, it will create lot of friction, lot of drag. So you will see now it is very smooth when you see rocket is ready to launch. It is very smooth, right? Everything is inside and it is covered with, like, see, when you Yes, purchase sir. some gift, what do? You do very nice wrapping, right? Isn't it? Gift wrapping and at all. Same Yes, thing. sir. You can say this is kind of gift wrapping. You are putting some layer or some case to give the smooth of this what your rocket looks very neat and clean. Insulation layer. What will happen here? This, can you see the green color? If you see the green color, Yes, sir. now inside the green color you have something called black color. Can you see that? If you look at Yes, here, yes, sir. okay, this is green color. Now we have opened this. If we open this, you can see black color, and black color is surmounted with green color, cover with green color. So here the black color is a fuel. Black color is actually propellant. What is black color? It is Propellant. Black color is propellant. it is a Propellant. 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 So now actually that is only will get fire. That only will get fire. You can see here, if you look at something is there called igniter. This is called igniter. This will generate the spark. Can you see the small color here? Small thing in the Yes, third picture sir. also there. Yes, Can you sir. see that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is Sir. called spark. You can say that generates actually spark. Because of that, what will happen? This black color, that is actually your propellant, fuel plus oxidizer mixture. It is in the solid form, so it will start to burn. Like, it's like that. If you burn a candle, what will happen? Light up a candle. Candle will start to burn, right? The same way. Yes. You have given the spark, then it will start to like a fire, like your agarbatti, right? Or your dhoop you use for worship, right? Dhoop, what will do? Once you fire, it will keep on what? Keep on throwing the smell into the atmosphere. It will be Yes. keep on burning. So the same way, you will generate a spark and this will burn. So black color part is the propellant, and the green color which that coating has been done, that is called insulation. See, when something will fire, it will generate heat, right? Now if that heat will be very high, so that should not transfer to the body, the structure, that main surface, because it will also become more it will also create, otherwise your material will become, it will be get heated. So you don't want that. So to just protect that, we'll be having some insulation layer, like a thermos bottle. We're having a layer, right? The same way. So heat will not go. Whatever the heat is generating, it will be inside of this. It will not go beyond of that. Because if it go beyond the green color, if it go, your material, the surface, the casing, this part is going to heat up, and that is actually in the contact of the atmosphere. So what will happen? It may cause the blast of the aircraft. Okay, that is the thing. Is it clear, guys? So here casing, then you have insulation layer. Okay, so let's go for the next part. So next we have nozzle. So nozzle, yesterday we have discussed what is the purpose of the nozzle. Yesterday I said that it will increase the whatever the exhaust, whatever the hot gases are coming out, that will come with very high speed. Can you see that? What is the shape of the nozzle? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So it is called convergent divergent nozzle, CD nozzle. What is called? 3D nozzle. CD, CD CD, nozzle. CD CD nozzle. nozzle. The full form is convergent, divergent, Conversion and diversion. convergent Diversion. and divergent nozzle. Sir. Yes. Sir, in solid propellant rocket, we use CD nozzle. We will take the doubts at the last, Karvit. Okay, at the last of the, you can write down. If anybody have any doubt,
we will take at the last of the session, or let me finish the solid part. Okay, otherwise we'll not able to finish because I have to finish a lot of part today because tomorrow is the last session. So I'll take your doubts at the last. Okay, now, but I would like to tell you CD nozzle is not in only in solid, it is in all the rockets. Either it is solid, liquid and cryogenic, nozzle will be the CD nozzle only. Now here, what is the nozzle name, guys? CD nozzle, right? It is the CD nozzle. So now here what will happen? You can see that what is the first when the fire will come in, you can see the area is bigger. Can you see that? Fire will come in, area is bigger. Then what is happening? It is converging. It is getting Yes, sir. converged. Means it is going towards one point. Now it is area decrease. Then what is happening? Again area is Increase. increase. So that is how the things will be happening. Like your nozzle is in that kind of shape. So what has happened? Like that, your velocity of the exhaust gas is going to be increased. Okay. So nozzle is what? Converging and diverging nozzle to expand and accelerate the combustion gas from the propellant. So जब आपका ये propellant बर्न होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये स्पार्क है यहाँ पर, ठीक है, Yes, स्पार्क sir. प्लग, Yes, sir. इसके आप इग्नाइटर भी बोल सकते हो, क्या बोलते हो? इग्नाइटर, इग्नाइट Igniter. करता है. तो यहाँ से ये क्या हुआ? Igniter. We will use Igniter. the electrical signal to generate the spark, and with the help of this black color, that is propellant, like fuel plus oxidizer, and that is in the solid form, it will start to burn. And then what will happen? Whatever the gases, hot gases will generate because of the burning of this black color, it will pass it through the nozzle. And that nozzle, you know that whatever will come, it is first what is happening? Like converging, it is going. So what is happening? Whatever the gas, it will start to accelerate. Means speed will start to increase. Yesterday I gave you example. If area is less, it will speed up. What will happen? The moment air that hot gases will come here, it will speed up. Then again it will slowly divert, and that is how the your hot gases is going to generate the velocity. Okay. So the purpose of nozzle is to Yes, sir. accelerate the combustion gas. और जो भी गैस आपकी आ रही है, जल रही है, ठीक है, जलने के कारण यानी उसको एक्सपेंड करने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये नोजल का पर्पज है. आगे क्या है? प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट मैंने आपको बताया क्या होता है. व्हाट इज प्रोपेलेंट? प्रोपेलेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर. तो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये क्या है? ब्लैक कलर जो आपको लंबा सा दिख रहा है, Yes, ये sir. आपका प्रोपेलेंट है. फ्यूल प्लस Propellant. Sir, fuel plus Oxidizer. propellant. ऑक्सीडाइजर को मिला करके बनाया गया है, ठीक है. अब देखिए इसमें एक आपको स्टार दिख रहा होगा, बीच में दिख रहा है. Yes, sir. तो ये क्या होता है? जब when we make the propellant ना, for these designs will be there, like use these uniform designs will be there. Okay, so like it is called grain. Okay, star grain. What is this? Star. Star grain. इस तरह you can have many types of shapes, but it should be a like what is it? Symmetric like that. All the direction length should be same. It will be like a symmetry. Now you see that in the next picture. Can you tell me what is that? I have encircled. Anyone? In Hole. the next second picture, you can see something white color in the center. Yes, sir. What is that? Igniter. So that is igniter. This is Igniter. so Igniter. actually igniter will be kept in between of this because it is hollow. Propellant, whatever you are making propellant grain, it is hollow. It is Hollow. so hollow will be having some, like, see, it can be like this also, circular also. It's depend which is more more what is it say, more efficient. So actually generally we say star grain. This solid propellant is more stable one. Generally we prefer for star one. Now here you can see at the center, like the spark will be kept in the center. Okay, like suppose this is the gap. Okay, so star will be kept here and then spark will generate. Like igniter will be kept here and spark will generate, and uniformly it will burn. Are you getting how it will burn? Like see, when it will spark will generate, it will burn like this. Like see, in all the directions will burn slowly. It will burn like this. Can you see that, guys? How it will burn? See, first one layer. Are you getting, guys? Slowly it will increase like this. Are you getting? Yes, sir. It will burn like this. Yes, sir. Slowly it will increase like this.
Are you getting, guys? Yes, sir. Yeah. Burn, and like that it will be fully going to burn. So this is what. So this is the propellant. Yes, sir. This is the, guys, please mute yourself. It will be better if you mute yourself because, okay. Let's go for the next. So I told you igniter. What is the purpose of igniter? With the help of electric signal Sir. to spark and burn the what? The propellant. So igniter is Propellant. basically, it will generate with the help of electrical signal. It will generate a spark and that will cause the burning of the propellant. So basically to burn the propellant, to burn that fuel and oxidizer, that mixture in the solid form, we use the igniter. Is it clear? To generate the spark Yes, with the sir. help of electrical signal and burn the propellant. It's called igniter. Let's go next. Okay, so now these are the components done. Now making procedure of solid propellant. Right? Means how your this solid propellant actually made up of. So what will happen? We will be having oxidizer separate and fuel separate. Now what will happen? They will mix. You just remember, blue color is oxidizer, red color is fuel. Okay, they will be mixed. How they will be mixed? Propellant made by two chemical solid propellant component. One is oxidizer and another one is fuel. So what they do, in the next slide you will see, we have a oxidizer fuel separately. They are going to mix. Like suppose you make like what you say, aloo parotha. How you make? First you make, आप आटा को गूंथते हो और आलू का भरता अलग बनाते हो, फिर क्या करते हो, उसको बीच में भर के फिर बेल देते हो, right? Like that you do, right? The same way. Now how you'll make? Combining fuel and oxidizer. मतलब fuel and oxidizer को एक बर्तन में डाल दीजिए आप, एक vessel you have to keep, then mix above 58 degrees centigrade of heat, then it become in the form of paste. So what you have to do, you have to put both together, fuel and oxidizer, in one vessel or some grinder or mixer that you cook. And what is the temperature you have to keep? 58 degrees centigrade approximately. Celsius. So it will become like a grease. You know what is grease? In cycle and bikes they put in the that, right? Your जो rim होता है आपका साइकिल का, Yes, sir. उसमें we use this grease and at all. So it will become like that. Okay. So then what we'll do, and then it will be in the form of paste. Then we'll put in the mold. Like we'll be having like cylindrical shape, like some pipes and at all. In that we will fill, and after some time it will become very solid. Right? How the candles happen? We have a liquid. We'll put in वो सांचा होता है ना, like kulfi and ice cream बना लेला. We convert into liquid and then we'll put into that and put into the like refrigerator. So it will become solid. The same way we do here. Is it clear? How the grain forms? Yes, sir. Okay. Now, working principle of solid propellant rocket. So what will happen? See, in the first picture, we have our propellant, that blue and red color you can see. The spark plug has generated electrical signal. Then second picture you can say, due to the electrical signal generated, that ignition has happened. So ignition, the combustion takes place. So आप देख सकते हैं यहाँ पे combustion हो रहा है. तो आपका fuel क्या हो गया? जलने लगा. दिख रहा है आपको? That propellant Yes, is sir. burning. Now when Yes, the sir. propellant will burn, so now what will happen? See, this is propellant is burning. You can see two places fire is happening. Can you see in the first picture? Yes, sir. This is fuel is burning. That propellant is Yes, burning sir. with the help of, and then what will happen? Hot gases will start to come out. So hot gases cannot go this direction. Hot gases will not go like this direction because we have a insulation layer. We have a insulation. Insulation layer. So all the hot gases, see here we have a high temperature. You know that when the heat will generate, so wherever heat is, there high temperature, and far away from that, it will be low temperature. And always remember, heat will always travel from high temperature to low temperature. So what will happen? Heat, this fire, because of the fire, whatever the heat is generating, energy is generating, that cannot go in the direction of pink color. Why? It cannot go because we have the insulation layer. We have the Insulation layer. so what will happen? These gases will go in only one direction, that is in this direction, towards the nozzle. Now nozzle is like this. Can you see that? It's like kind of CD nozzle. So from there, what will happen? These hot gases are going to expand. These fires will come out very high velocity, with very high velocity, and this engine will go in the forward direction. So you can say that in the second picture. Can you see that? Second picture.
Now they Yes, have sir. closed that with the casing. You can see the rocket. Now that fire, this fire is coming here out. Now you can see when this fire is coming out, there is a action in the backward direction. Action in the which direction, guys? Backward direction. Backward. So what will be the reaction? Reaction is forward. Reaction will be direction. forward, and that is how your Yes, sir. so this forward reaction will be called as thrust. That is what fifth point is written. This thrust propels the rocket, or rocket will move forward. So rocket Forward. आपका आगे जाएगा. Is it clear? Yes, This is sir. how your solid propellant rocket work. Like in PSLV, if you talk about PSLV having 4 stages. How many? 4 stages. Four Four stages. So the first stage is like this only, solid propellant. First stage is solid Solid propellant. propellant. तो फर्स्ट वाला जो स्टेज होता है, मींस फर्स्ट स्टेज मतलब फर्स्ट पहला इंजन जब फायर होता है तो इसी तरह काम करता है. दैट वर्क्स लाइक दिस ओनली. इज इट क्लियर Yes. एवरीवन? Yes, sir. Okay, fine. So let me go to the next. Okay, now let's talk about advantages, disadvantages, and application of solid propellant rocket. So, what are the advantages? So, advantages, these solid propellant are easy when you go for designing. So simple in design and construction. They do not any feed system. Means उनको कोई जैसे liquid के case में क्या होगा? We need to store it in tank. So we need separate tank also in the rocket. Rocket will carry separate tank in which you will fill that because it is in liquid form. But if it is a solid, you don't need to carry any tank separate. You can just fit into it. So that is another advantage. They do not need any feed system. Less vibration due to absence of moving part. So solid के case में क्या होता है? You don't have any moving part. Moving मतलब जैसे आपका जो इंजन होता है एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? फैन जो होता है आपका प्रोपेलर होता है, दैट इज व्हाट दैट रोटेट्स, राइट? इजंट इट? इन द एयरक्राफ्ट इंजन, Yes, sir. एयरक्राफ्ट में जो एरोप्लेन में आपका जो इंजन होता है उसमें फैन रोटेट करता है, राइट? इजंट Yes, इट? sir. So actually Yes, sir. aircraft having the moving part, but in आपके इसके केस में रॉकेट के केस में क्या होता है? नॉन मूविंग पार्ट होते हैं. मतलब कि इंजन भी होता है वो एक ही जगह फिक्स होता है, उसमें कोई फैन नहीं होता है. फायर होता है, फायर के कारण हॉट गैसेस नोजल से एक्सपेंड होती है, उसके कारण पीछे की ओर एक क्या होता है? गैसेस तेजी से निकलती है तो उसका रिएक्शन आगे की ओर होता है. ठीक है ना? Yes, sir. दैट इज द थिंग. तो Yes, अगर sir. आपके मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन लेस होगा, ज्यादा मतलब कि ज्यादा होगा या कम होगा? यू विल बी हैविंग कम. लेस वाइब्रेशन. Come Yes, over. sir. मूविंग पार्ट्स नहीं है आपका, राइट? So that is the thing. Now disadvantage. See, अब देखिए, everything having its own advantage and disadvantage. So what is disadvantages? What are the disadvantages? In case of emergency, it is difficult to stop the engine in the midway. So आपने क्या किया? If you fire one time, if you fire once, you cannot stop the fire. Means you don't have control over to the fire. Once you fire, it will not stop until entire propellant will not burn. Is it clear? मतलब कि आपका एक बार फायर हो गया तो उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते हो. मतलब कि आपका जलता रहेगा जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा. समझ रहे हो आप? लाइक अगरबत्ती की तरह आपका जो धूप होता है, धूप बत्ती, राइट? उसको आपने एक बार जला दिया, अगर आप उसको रोक नहीं रहे हो, क्या हुआ? वो पूरा जलेगा, है ना? बट अगरबत्ती में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है. बट धूप बत्ती में एक बार जला दिया तो क्या होगा? इट विल कीप ऑन बर्निंग अंटिल एंटायर धूप बत्ती इज नॉट योर गेट्स ओवर. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. मतलब आप बीच में रोक नहीं सकते हो, एक बार अगर फायर कर दिया पूरा जलेगा ही जलेगा. डिक्रीजिंग द स्पीड इज नॉट पॉसिबल. मतलब कि आपको अगर स्पीड कम करना है, बहुत ज्यादा स्पीड दे रहा है जो गैस बाहर आ रहा है इसको, तो उसको कंट्रोल नहीं. यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट एवर द गैसेस आर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट and it can't able to stop after once ignited. That is what I mentioned, the same point, first point. मतलब कि एक बार आपने अगर ignite कर दिया, you cannot stop it. Okay? And application if you talk about, कहाँ पे most of the time this solid propellant use होता है? In military it is used to launch missiles. मिसाइल जो होती है, मिसाइल्स में भी आपका solid propellant होता है, पता है? तो मिलिट्री में मिसाइल्स के लिए यूज solid propellant. बूस्टर्स आपने सुना होगा, रॉकेट में एक्स्ट्रा वो होते हैं साइड में, देखेंगे छोटे, जैसे ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा. ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ. व्हाट इज बूस्टर्स? बूस्टर्स इज काइंड ऑफ स्मॉल थ्रस्टर्स, स्मॉल इंजन आप बोल सकते हो, जो एक्स्ट्रा आपको Extra thrust provide करते हैं. ओके आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइड में देखिए, देखिए ये आपका PSLV है, ठीक है?
तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, छोटे से इसके साथ में अटैच्ड है, यस और नो? Yes, sir. These are called boosters. These are used for basically for additional thrust. Additional मीन्स ये भी बंद Thrust. करेंगे ना तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी हमें मिलेगी, तो ये एज ए एडिशनल थ्रस्ट, एडिशनल इंजन की तरह, छोटे इंजन की तरह होते हैं, ठीक है? ओके, बूस्टर्स क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज बूस्टर? Yes, sir. Sir. ओके, सो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना? तो बूस्टर्स वाई वी यूज टू इंक्रीज द पेलोड, मतलब आपको अगर पेलोड बढ़ाना, मतलब जैसे मान लीजिए आपने खूब सारी सैटेलाइट लॉन्च करना है एक रॉकेट लॉन्च से, यू वांट टू लॉन्च मोर सैटेलाइट within the one rocket launch, so you have to feed more weight, you have to carry more weight, so for that you need to generate more thrust. Okay, so for that you can use the boosters for additional thrust. Okay, shall I go to the next? Yes, sir. Okay, now you Yes, have some sir. types of solid propellant. You can just remember the name, no need to go for deep, like double base propellant, and you have, like you can see here, consists of nitrocellulose and nitroglycerin plus additives. So okay, these things are not, you don't need to go too much deep. So now one thing you can remember, like I said propellant, right? So propellant is the combination of fuel and oxidizer. तो जो आपका फ्यूल यूज होता है, ऑक्सीडाइजर क्या क्या यूज होता है? अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, ammonium chlorate. Ammonium So these are the chlorate some of and the oxidizer. These are the some of the oxidizer used for the propellant. And what are the fuels? Fuels used a sulfate type like compounds like plastics. Okay, hydrocarbons. Okay, so like hydrocarbons which having hydrogen, like methane, like CH4, which having hydrogen. Okay, as fat as it is, okay, asphatic type compound or plastics. Okay, so these are the some of the oxidizers. Okay, so this you can remember, but okay, it's fine. You don't need to, you know, even sugar canes, you know, sugar canes, cane sugar. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They are also like, you know, black powder and sugar, this cane sugars. They're also actually they convert it as a fuel and use it like in the solid propellant. You can Google it and search it YouTube, like cane sugar, how they use like that. Okay, to this make the propellant in it all. Okay, now I will give you a 1 minute of break. Okay, now you have a Yes, sir. 1 minute of break. You can go through, and if you have any doubt, you can ask. Okay. Sir. You can raise your hand, guys. You should raise hand. Okay, if you have any doubt. Okay, so we'll continue now. So yes, you can raise your hand if you have doubt. Yes, Garvit. Sir, how many types of nozzles are there? You only CD nozzle. As per now, you can remember CD nozzle. Okay, Okay, sir. converter And diverging nozzle. I didn't understand what was the use of the shape star like. That is for uniform burning. आपका जो बर्निंग है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. पता चला ऐसा कि एक तरफ ज्यादा बर्न हो रहा है, एक तरफ कम बर्न हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब चारों तरफ बराबर में उसका क्या होता है, जलना चाहिए. अगर तो एक तरफ बराबर ज्यादा में क्या जलेगा, एक होता तरफ कम जलेगा, तो आपका फायर ठीक से नहीं होगा और आपका रॉकेट अनस्टेबल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी मेक दिस काइंड ऑफ शेप, यूनिफॉर्म शेप. इग्नाइटर को हम सर, बीच में रखते हैं. हम स्टार्स के अलावा और शेप भी ले सकते हैं. There are many shapes. You have to research. You have to look. I am not gonna to tell you that. You have to just search it. Okay. What are the different types of grains? Okay, sir. Yes, Amrit.
सर मुझे केसिंग क्लियर नहीं हुआ है सही से। अच्छा, देखिए दो चीजें, केसिंग है, इंसुलेशन लेयर है, ठीक है ना। केसिंग क्या होता है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल, आप फाइनल फिनिशिंग बोलते हो ना, फाइनल फिनिशिंग, समझ रहे हो आप। यस सर। जैसे बताऊं आपको, ये वाला पिक्चर देखिए, चौथा वाला पिक्चर, चौथे वाले पिक्चर में क्या है आपका, देखिए प्रोपेलेंट अंदर चला गया है, राइट, यस। एवरीथिंग इज इनसाइड. So this white, you can see na white color, this white color, that body, like outer structure Yes, sir. को हम फाइनल फिनिशिंग देते हैं ना, उसको कवर कर देते हैं सब कुछ पूरा, ऐसा नो, यस पूरा कवर कर देंगे बाहर से, अच्छा सा लुक देने के। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या होगा आपका, रॉकेट में दिख रहा है, अच्छी सी फिनिशिंग, आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं केसिंग, समझ रहे हो आप। यस इसके सर। अंदर सब कुछ छिप जाता है, इंजन हो गया, पेलोड हो गया, पैरासूट हो गया, जो भी है आपका, टैंक हो गया या प्रोपेलर, सब इसके अंदर छुप जाता है। मतलब कि सारी चीजों को छुपाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बाहर से हम एक मेटेलिक का वो बना करके लगाते हैं, और ये क्या होता है, काफी स्मूथ होता है, तो जब हवा में मूव करेगा, अगर ऐसा ऐसा देखिए, जैसे कार कार का एग्जांपल लीजिए, जिसमें आगे की ओर इंजन होता है, डिग्गी जिसे आप बोलते हैं ना, आगे वाला पंपर टाइप, उसमें क्या यस होता है सर। इंजन, तो अगर हम ऊपर से वो बंद करने वाला नहीं लगाएंगे, ऐसे खोल के रखेंगे, तो क्या गाड़ी ठीक से चलेगी, मतलब इंजन हमें दिख रहा है बाहर, यस सर। तो ऊपर से क्या करते हैं हम, वो मेटल का बढ़िया सा स्मूथिंग दिखने के लिए लगा देते हैं, अंदर अंदर इंजन होता है, ऊपर से ऐसा क्लोज करके लगा देते हैं, राइट, ऐसा नो। यस तो फिनिशिंग के लिए होता है, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी ठीक से काम करेगी, और इंजन आपका हवा में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जब गाड़ी मूव करती है तो हवा तेजी से आती है, तो क्या होगा, डायरेक्ट इंजन के कांटेक्ट में ना आके उससे गाड़ी के ऊपर से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो केसिंग इज दैट वन, फाइनल फिनिशिंग, समझ में आ रहा है आपको। यस उससे क्या सर। होता है, अंदर क्या हो रहा है रॉकेट के अंदर, और बाहर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में अलग अलग रहता है, दैट इज कॉल्ड केसिंग। इंसुलेशन लेयर क्या होता है, आपका रॉकेट के अंदर फायर होता है ना, और जो प्रोपेलेंट जब जलता है तो वो हीट जनरेट करता है, तो उसके कांटेक्ट में जो पास में होता है वो भी गर्म होने लगता है, तो बाहर की जो केसिंग है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे हमें, बाहर की जो केसिंग है और आपका जो दिस प्रोपेलेंट है, इसके बीच में हमें एक लेयर बनानी पड़ेगी, दैट इज व्हाट आई शोन यू, दैट ग्रीन कलर लेयर, दैट इज इंसुलेशन। तो इससे क्या होगा, जो प्रोपेलेंट जल रहा है उसके कारण जो हीट जनरेट हो रही है, वो ग्रीन कलर की लेयर, इंसुलेशन लेयर के कारण क्या होगा, दैट विल नॉट ट्रांसफर टू द surrounding, or any heat which is outside, or anything which is outside of the air happening in the atmosphere, that will not come inside the rocket engine, and that is what insulation layer. Clear है Amrit? Clear यस हुआ? सर। यस सर थैंक यू। यस सर थैंक यू। Shall we go to the next, guys? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now we'll go for, Yes, sir. so okay, I have a question for you guys. Can you list out components of the solid propellant rocket? Who want to answer, please raise your hand. Raise your hand. Solid propellant rockets components, please raise your hand, guys, who want to answer. What are the components of solid propellant rocket? No one? Components of solid propellant rocket. Nobody knows? Only one person? Yes, Manisha. Nose cone, Okay. casing, Okay. Good. insulation layer, Very good. propellant, Very good. integrator, Integrator. No, it's igniter. मतलब spark generate करने की. It's for igniter, generating spark. Igniter. igniter, Then, nozzle. हाँ, nozzle. करण बोलिए, करण बोलिए. Sir, casing, nozzle, grain, propellant, charge, and igniter.
Igniter. Okay. Yes, Very sir. good. Okay. Okay. So good. Yes, Garvit. Yes, sir. Casing, insulation layer, igniter, nose cone, and propellant and nozzle. Yes, Ayush. Amrit. Yes, Amrit. Okay. Okay, let me go to that. So correct answer. So you have, like you can see here, nose cone, casing, insulation layer, propellant, igniter, and nozzle. Okay. Okay, sir. Okay. Now here I have a question, another question. What's the purpose of nozzle? Raise your hand, guys. What's the purpose of nozzle? Yes, Amrit. Yes, Amrit, your mic is off. What is the purpose of nozzle? सर जो नोजल होता है वो सर जो हॉट एयर होती है उसको नीचे डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ उसको थ्रो करती है जिससे कि रिएक्शन होता है और जो हमारा रॉकेट होता है वो ऊपर की तरफ जा पाता है. Okay, good. Yes, Garvit. सर जो नोजल होता है उसका काम ये होता है कि जो नोजल होता है वो एक नुकीली शेप होता है ऊपर से जिससे जो प्रेशर पड़ता है फ्रिक्शन पड़ता है रॉकेट पे वो उसे कम करता है जिससे थ्रस्ट ज्यादा बढ़ सके रॉकेट. Okay, so generally what if अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये आपका पता है क्या, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है. क्या करता है? प्रेशर एनर्जी ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू, प्रेशर जनरेट होता है आपका, ठीक है ना. जब गैसेस आपकी गर्म होती है, व्हेन योर गैसेस दैट प्रोपेलेंट बर्न्स, gases generated and that will be very high pressure gases. Now what will happen when they start to move from the nozzle, when they come out, they will come out with very high velocity. And you know what is kinetic energy? Half mv square. Kinetic energy is directly proportional to the velocity, right? So velocity से kinetic energy आपकी सीधा सीधा उसका संबंध होता है. वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एनर्जी किसमें बदलती है? काइनेटिक एनर्जी में. तो नोजल का एक और फंक्शन होता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो नोजल कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू kinetic energy. Okay. Sir. And these gases, whatever the burning gas, because of the propellant, that igniter sparks happen, and then what will happen, that it will start to burn and gases will start to generate, and it will come out from the nozzle. So it will come with very high velocity. Okay. So the purpose of nozzle is converting pressure energy into kinetic energy. And so what will happen when it convert into kinetic energy? So these gases, whatever that coming because of the burning of the propellant, will come out with very high velocity. हाई वेलोसिटी से बाहर आएंगे. ठीक है सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस गर्वित. सर व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी? सी आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, डिफरेंट साइज एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. साइंस में पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? नो सर. 8th क्लास में पढ़ा होगा ना. 8th क्लास में होता है ना डिफरेंट टाइप. इवन हमारी 7th में भी. आप तो 9th में हो ना, 8th में होता है टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी चैप्टर होता है आपका. सर नहीं है सर हमारी भी. नहीं, आपने पढ़ा होगा. साइंस में तो होगा, 8th में होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है सर हमने 4th क्लास में पढ़ा था. हाँ सर हमने तो 4th क्लास में पढ़ लिया था. 4th में ही पढ़ा आपने? Yes, sir. 4th क्लास? 4th क्लास में? Yes, sir. मैं 4th क्लास में साइंस बुक में चैप्टर आया था सर ये. यस सर. सर इसके ऊपर पूरा चैप्टर था. Wow, that's a really great. See, actually this energy type, Garvit, you have to go through again. Okay. No, sir. Such what are different types of what is kinetic energy important? NCERT there was no chapter, sir. See, it is not like that. Energy will be there. Check it. Okay, energy will be there. In 6th class itself, you will study about energy, geothermal energy, renewable energy, non-renewable energy. So these are study, but kinetic energy, potential energy, something not. That will be there, Garvit. If not, okay, you can just search it. Okay. Then not, then I will answer. Yes, Karan.
करण आपका हैंड रेज है. Okay, next question. Types of solid propellants. One example बता दीजिए. सर रिपीट क्वेश्चन. सॉलिड प्रोपेलेंट के प्रकार क्या होते हैं? प्रकार बताने हैं आप. मैंने एक बताया था आपको. डबल बेस प्रोपेलेंट. व्हाट इज दैट गाइस? डबल बेस प्रोपेलेंट. ठीक है, एक प्रकार मैंने बताया था. एसटीटीपी भी एक होता है आपका. एसटीपीबी ऐसा करके. सर कमाई ये देखिए यहाँ पे. यस, क्या बोल रहे हैं आप? सर कुछ नहीं. Okay, there is a something, one more propellant is there, you know. One is double base, and there is a something is called STPB. What is that? ST. See, as per now, you are in the lower class now. You should just know the name. Okay, in the solid propellant, what the things are there. So as you go higher grade, you will come to know. So what is double base composite propellant? Second is STPB. What is the second one? STPB. इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. तो अभी इतना बड़ा आप याद करने का आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ. हाइड्रोक्सिल फुल फॉर्म होता है, ठीक है, भाई हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. पॉलीब्यूटाडाइन. This is the full form of STPB. This is another type of your solid propellant. So okay, now what are the applications of solid propellant rocket? Next question, guys. Please raise your hand. Application of solid propellant rocket. Applications of solid propellant rocket. कहाँ पे इनका यूज होता है solid propellant rocket का? Only one person is raising hand. Okay, that is your home task now. Okay, application of solid propellant rocket. Garvit, you are answering all the questions. Okay, I'll give you a chance. Let other try. Anyone? What are the applications of solid propellant rocket? Yes, Karan. Sir, rocket missiles for civil scientific use to sounding rocket and launch vehicles. Okay, good. तो आपके जो मिसाइल्स होते हैं उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट ही यूज होता है, ठीक है ना. मिसाइल्स हो गया या साउंडिंग रॉकेट्स हो गया आपका, ठीक है ना. इन ऑल दोस रॉकेट्स और योर मिसाइल्स एक्चुअली वी यूज सॉलिड प्रोपेलेंट. ओके, गुड गुड कर. Okay, okay, let's go move on to liquid propellant rocket. Next one is, what is that? Liquid propellant. तो अब जैसे कि आपको पता है सॉलिड कब आया, आपका 13 कौन सा सेंचुरी में? 13th century, ठीक है. Then how the liquid has come? So as we all know that rocket engines are one of the most difficult and complex machinery made by mankind. तो इंसानों के द्वारा जो सबसे डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनाई गई वो क्या थी? रॉकेट इंजन, ठीक है. The first working liquid engine, rocket engine, was developed by an American scientist, Dr. Robert Hutchings Goddard, in 1926. That rocket traveled 45 feet during 2.5 seconds. ठीक है, ये पहला रॉकेट था जिसे एक अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया जिनका नाम डॉक्टर रॉबर्ट हचिंग्स गॉडर्ड 1926 में, और जिसने कितना दूरी तय किया? 45 फीट 45 फीट इन 2.5 सेकेंड. ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए जस्ट हो गया. अब चलिए कंपोनेंट्स की बात करते हैं. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट? नोज कोन, casing, fuel and oxidizer tank, turbo pump, flow control valve, combustion chamber, fuel injectors, igniter, nozzle. Fuel and oxide tank. Okay, now I would like to ask question.
Flow Can you control. tell me what are the components which are extra, like apart from in solid propellant you have seen already some were there. Now here some extra has added. What are those? Can you list out? See, it is common in solid also. It is there in solid also, but what are not there in solid? Newly added into this liquid. Please raise your hand. Yes, Piyu, boliye. Nose cone. Sir, oxidizer tank. Oxidizer Flow tank. control. It's the oxidizer tank. What is that? Oxidizer tank. Okay, Piyu. Okay, sir. Fuel and oxidizer tank. Okay, very good. Then Flow control wave. okay, valve. Flow control valve. Okay. It's a valve. Valve. Okay, valve. Okay. Okay, sir. Yes. Next, Combustion chamber. it's a combustion chamber. Yes, sir. Okay, then Fuel injector. okay, fuel injector. Turbo pump. It's a turbo pump. What is that? Turbo pump. Turbo pump. Any other thing which is which were not there in the rocket, that solid propellant? No, sir. So these are the newly added, right? Isn't it? So now I think nose cone. You are already clear. Definition will be same. What is nose cone? What is casing? What is igniter? And what is nozzle? Right? Only few has come new. So now see nose cone. You already know. Casing, it is similar to that. Now what is fuel and oxidizer tank? So I told you, in the case of solid, it will be like this shape in the solid form. So you don't require any tank and at all. But in the case of liquid, you will be having two separate tanks. How many separate tanks? Two separate tanks. One will be fuel tank and one will be oxidizer. So you have to carry two separate tanks for to carry fuel and oxygen. So fuel is hydrogen in the liquid form and oxidizer is oxygen. So you will be having one H2 tank, one O2 tank. Okay, right. Next is turbo pump. So मैंने आपको बोला था, when you like take a groundwater on the earth surface, you require a motor or submersible, right? In your home, Yes, sir. submersible or motor. If you don't have submersible and you don't have motor, can you take the water from the ground? No, sir. The same. Like see here we have a combustion chamber. Means जहाँ पे आपका जो fuel है वो जलता है. Like आपका in solid propellant, is there was any combustion chamber? Separate combustion sir. chamber जहाँ पे fire हो रहा था? नहीं. उसका पूरा जो fuel वाला जो था, solid वाला, वही क्या था? Combustion chamber था. In solid propellant also combustion chamber, but there is no separate. Where the fuel is and where the propellant is, that propellant itself is a combustion chamber. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे propellant रखा होता है, but यहाँ पे क्या होता है? Fuel and oxidizers stored in a tank. Then with the help of turbo pump, they will be going to pump to the combustion chamber. तो जहाँ पे फायर होता है वो अलग होता है, अलग जगह होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? We say as combustion chamber. So oxidizer and fuel start to move with the help of start to pump. They are going to pump to the combustion chamber with the help of turbo pump. And how much amount of the fuel has to go into the combustion chamber? मतलब कितना amount फ्यूल का जाएगा कंबसन चैम्बर में और कितना ऑक्सीडाइजर का जाएगा, उसको हम कंट्रोल करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व से. मतलब कितना जाना है. लाइक आपका नल होता है ना, टैप, कितना पानी आपको खोलना है तो कंट्रोल करते हैं ना उससे. द सेम वे वी हैव अ फ्लो कंट्रोल वाल्व. विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल कंट्रोल हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्यूल नीड्स टू गो needs to go in the combustion chamber and how much amount of oxidizer needs to go into the combustion chamber. So here we have a control. So if you have control over to the fuel and oxidizer, you can control the fire also. Are you getting? So like in the solid propellant, I said na, when once it ignition happen, you cannot stop. But in the case of liquid propulsion, the advantage is you can control it. When you want fire, you can fire it. When you want to stop, you can stop it. Are you getting? It's like a cylinder. When you want to burn a LPG gas and make your chapati and at all, you can on it and you can light up and you can prepare it, then again off it. The same way here you can control. Then you have something is called fuel injector. So fuel injector, what will happen? Whatever the fuel is coming, it will with the help of fuel injector, it will convert into the small drops, and that small drop
will go into the combustion chamber, and the time it will convert, it will go to the into the combustion chamber in the form of small bubbles and droplets. Igniter will generate the spark with the help of electrical signal, and fire will happen. And then what will happen? Again, the same procedure. It will start to burn like fuel and oxidizer in the droplet form. They will mix fire, and the gases will come out, and then it will go from the nozzle, and then again the same process like how your solid propellant. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay. Sir. Now I will take the doubts, guys. Let me finish. Okay, now see fuel and oxygen. This is how the thing is inside. पहले वाले में कैसे था आपका, guys? फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को पूरा मिलाकर कैसे ब्लैक सा Yes, लगा sir, दिया था, complete पूरा एक mix. रॉड Yes, टाइप sir. का. But here you have separate tank. Can you see that? Yes, sir. Yes. इसके अलग-अलग tankers होने चाहिए. Separate, we store separately now because we cannot combinely, because they are at different temperature. फ्यूल का टेम्परेचर क्या होता है? फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन. आपको पता है फ्यूल का टेम्परेचर क्या था? मैंने बताया था कल, -250. -253. And oxidizer ऑक्सीजन का -180. -183. So we Mi- cannot minus keep them 183. together. That's why we have to keep separately to them. Are you getting? They need to store separately. Okay, now यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर और रेड कलर का पाइपलाइन. तो क्या होता है, यहाँ पे एक आपका टर्बो पंप होगा. क्या होगा आपका? तो ये समझ में आ गया आपको किस तरह से होगा रॉकेट के अंदर? Yes, sir. Let's go to the next. Now see, here we have a turbo pump. Can you see that, guys? Yes, sir. These are The turbo turbo pump. pump. How many turbo pump we have? 2 turbo pump. One is for fuel, one is for Yes, sir. fuel for, and So one for oxidizer. oxidizer. So pump, what it do, it will pump. Like see, आपको फ्यूल तो आपका स्टोर है ना ऑक्सीडाइजर टैंक में, वो मूव कैसे करेगा? तो मूव करने के लिए आपके पास मोटर होना चाहिए. जैसे आपका सबमर्सिबल होता है मोटर ना, उसी तरह आपका टर्बो पंप होता है. ये मोटर की तरह काम करता है. तो क्या होगा, टर्बो पंप से क्या होगा, फ्यूल मूव सर, करने ये लगेगा दोनों और सर फिर वो दो आगे की ओर बढ़ अंदर जाएगा. आ ऐसे गए हैं. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, what will happen? We have something called black color. Can you see that? Next one. After Yes. passing that fuel and oxidizer from the turbo pump, it will go into the black color part. That is called, Sir. you know what? What is that? Any idea? Combustion chamber. No. Combustion chamber is the yellow Fuel color. injector. Fuel injector. Very good. Very good. So what fuel injector will do? यहाँ पे आपका लिक्विड का फॉर्म में आ रहा है, उसको Yes, छोटे sir. छोटे बूंदों में कन्वर्ट करना, ड्रॉपलेट्स. इट विल कन्वर्ट इनटू small droplets. No plus. So now you can see in the next picture that how the fuel injector, what it do. Can you see that? Black color. Combustion chamber. And what is the yellow color? Combustion chamber. It is the chamber. place where burning of fuel and oxidizer take place. तो जो fuel and oxidizer होता है वो क्या होता है? जलता है. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next is fuel injector. To convert the liquid propellant into small droplet. Fuel injector क्या करता है? जब का फ्यूल है, ये propellant convert करता है सर टॉपलेस में. प्रोपेलेंट को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट Convert करता है. करता है. कन्वर्ट्स प्रोपेलेंट Yes, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट. तो Yes. प्रोपेलेंट मतलब क्या? फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर. Oxidizer. दोनों को छोटी छोटी बूंदों में ऐसे क्या करता है? कन्वर्ट करता है. ऐसा. अभी आगे आप पिक्चर में देखोगे. So to convert the liquid propellant into a small droplet that can burn more easily by spraying into the combustion. अच्छा आप बताइए, अगर आपके पास केरोसिन है, उसको स्प्रे करके जलाएंगे तो जल्दी जलेगा, या एकदम से ऐसे एकदम से डाल दिया तो जल्दी जलेगा? इसमें इजीली जलेगा. स्प्रे करने से इजीली जलेगा. इसीलिए यहाँ पे हम बूंदों में कन्वर्ट करते हैं. अभी स्प्रे. ठीक है. ओके. तो फ्यूल इंजेक्टर समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? कंबसन चैम्बर दिख रहा है आपको बच्चों? येलो कलर. Yes, sir. अब देखिए यहाँ से फ्यूल आया और ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या सर हुआ, फ्यूल इंजेक्टर से कन्वर्ट करके सर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ. योर फ्यूल Yes. एंड ऑक्सीडाइजर Yes, कन्वर्ट sir. इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, एंड इन द कंबसन चैम्बर समथिंग इज सिटिंग. व्हाट इज दैट? इग्नाइटर. ये स्पार्क Sir, जनरेट the किया fire. इसने. और अब देखिए, अगर आपका जो डीजल पेट्रोल होता है या जो कैरोसिन, उसमें छोटा सा स्पार्क अगर लगता है तो क्या होता है? जल जाता है, राइट? इवन आपका जो अल्कोहल sir. होता है उसमें भी.
तो ये यहाँ पे आपका फ्यूल ऑक्सीडाइजर है, इसके कांटेक्ट में क्या आ जाएगा, स्पार्क आएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप? सर द फ्यूल इज स्टार्ट टू लग जाएगी, जल जाएगा। तो देखिए अब ये स्टेप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इग्नाइटर के बाद नोजल, नोजल नोजल तो आपको पता ही क्या करता है, क्या करता है नोजल, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइक आपका जो सर हीट प्रेशर, एनर्जी को बाहर छोड़ते हैं सर। वही मतलब कि प्रेशर एनर्जी को पहले हीट में कन्वर्ट करता है, हीट से क्या होता है काइनेटिक में, ठीक है ना, क्योंकि हीट क्या है, सो हीट ऊपर आपकी जाता है। गैसेस है, हीट जो है वो क्या है आपका गैसेस है, फिर उसके बाद वो क्या होता है वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है। ओके, तो नोजल आपको दिख रहा होगा, सीडी नोजल। अब देखिए कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो, एरो दिख रहे हैं आपको, फ्यूल ने मूव यस करना सर, स्टार्ट कर दिया है, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर ने दिख रहा है आपको मूव करना यस स्टार्ट कर सर, दिया है। और देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, अगली पिक्चर में देखिए क्या हुआ है, टर्बो पर यहाँ पे देखिए बबल दिख रहे हैं आपको कंबशन चैम्बर में, यस you सर, can see the bubbles, खत्म मत कर रहे हो। यस सर, so they have converted into the small droplets. Now what happened, ignition, सर igniter has फायर, generated spark, fire happened in the combustion यस सर, chamber. In the second picture fire will start to come out through the nozzle. Can you see that now fire is coming out the nozzle? Can you see that? यस सर, See this fire is happening here. Can you see that guys? यस सर। सर इंडक्टर इग्नाइटर मतलब मीन्स वो उसको जलाता है, जिससे वो बाहर फायर छोड़ता है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखिए फायर हो रहा है कंबशन चैम्बर में, फिर नोजल के थ्रू बाहर आ रहा है तेजी से, तो ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, राइट? यस सर, So this is, and then like as gases are coming with very high velocity in the backward direction, so rocket will move in the forward direction. Is it clear guys? यस सर, Okay, next advantage disadvantage. What are the advantage? Combustion process are controllable, means हम control करते हैं, मैंने बताया ना valve होता है, you have a valve, you can control it. Speed regulation is possible, मतलब कितना speed चाहिए, that is also you can control. It is more economical for long range operation, मतलब अगर long range के लिए ऑपरेट करना बताया आपको कंट्रोल कर सकते हो, राइट? जैसे आपको मान लीजिए पूरी, आप पूरी को तलते हो, पूरी बनाते हो ना, तो क्या करते हो, बहुत सारी पूरी को तलने के बाद क्या करते हो, गैस को बंद कर देते हो, बट आपका जो तेल रहता है वो गर्म रहता है, तो गैस बंद करने के बाद भी आप कई सारी पूरी तल सकते हो, यस और नो? यस सर, So that is what the thing is, you can stop the engine, you can stop the that burning of the fuel, but still you will be having a velocity, so like that you can go for the long distance. Accident can be rectified at any, मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है you can rectify कहाँ पे प्रॉब्लम है, but in the case of solid propellant you cannot rectify because fuel पूरा जलेगा ही जलेगा आपका propellant. डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है सॉलिड के कंपेयर में। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी हाई होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई। साइज एंड वेट ऑफ द इंजन इज मोर कंपेयर टू द सॉलिड रॉकेट। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें रॉकेट को जितना हल्का बनाना है, बट अगर आप लिक्विड को यूज करेंगे, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को, तो आपका रॉकेट क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है? तो आप कम भार का सैटेलाइट कैरी कर पाओगे। यू if your rocket is very heavy you can carry less weight of satellite, if your rocket is light you can carry more payload. So our aim is to be carry what, more payload or less payload guys? व्हाट सर? like हमें ज्यादा भार को मतलब कि कैरी करना है या कम भार को कैरी करना है रॉकेट? ज्यादा को। so you can carry the more payload like a satellite when your aircraft is lightweight or your rocket is lightweight, right? यस सर, Types of liquid propellants. तो यहाँ पे देखिए this uses fuel and oxidizer separately as propellant. यहाँ पे इसमें liquid propellant में अलग अलग होता है टैंक। टिपिकल फ्यूल मतलब कि अब देखिए जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो फ्यूल क्या क्या होते हैं, फ्यूल में हमारा केरोसिन होता है, अल्कोहल होता है, हाइड्रोजन होता है और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, और लिक्विड हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। और ऑक्सीडाइजर क्या क्या यूज होते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड हो गया और मे बी नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। लिक्विड ऑक्सीजन मैंने बताया, लिक्विड ऑक्सीजन बेसिकली वी यूज इन क्रायोजेनिक। मैंने कल एक मूवी आपको सजेस्ट किया था वीडियो, राइट, देखिएगा उसमें आपको समझ में आएगा। देन लिक्विड फ्लोरीन। so these are the some of the oxidizers. तो आपको ये नेम थोड़े पता होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑक्सीडाइजर वन फ्यूल का नाम आपको पता होना चाहिए, तो आपको याद रहेगा एनी टू फ्यूल्स और वन फ्यूल
फ्यूल में क्या हो जाएगा आपका, कैरोसिन हो गया, Yes, sir. अल्कोहल हो गया, और लिक्विड हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीडाइजर में क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, लिक्विड ऑक्सीजन, टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए ऑक्सीडाइजर के। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका लिक्विड प्रोपेलेंट। चलिए अब आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट। तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप रेज हैंड कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो वी हैव डन विद लिक्विड प्रोपेलेंट नाउ, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर हाइब्रिड प्रोपेलेंट। एनी डाउट प्लीज डू आस्क, then we'll go for the next. Please guys raise your hand if you have any doubt. Please do raise your hand if you have any doubt. Even previous also, that solid propellant also you can ask. Only one person, one student. What about others? Everything is clear. Everyone, everybody, everything is clear. हाँ पीयू बोलिए। सर इसमें सॉलिड उसमें सॉलिड और क्या कहते हैं उसे सर, जो आपने वो बताया क्या कहते हैं सर, 2 मिनट्स दीजिए, अभी बताती हूँ डाउट। गर्वित गो अहेड। यस सर। सर आपने बोला था कि गर्वित। जो रॉकेट का इंजन होता है जब लिक्विड फ्यूल का होता है तब वो ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, लेकिन सर हमारा पीएसएल भी तो लिक्विड फ्यूल है ना सर? लिक्विड नहीं है, पीएसएलवी इज बोथ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। दो सॉलिड होता है, दो लिक्विड होता है, राइट? अच्छा सर, इसलिए See, ये we have चीज to look overall, not only like if liquid we use, it will be like we cannot carry. No, we have to look other factors also. You see that you have to travel long distance, right? So which is better for long distance? Tell me. Liquid is a better. लिक्विड। So you don't have to look only weight. You have to look other factors also, ओके right? सर, ओके। Yes, Piyu, बोलिए। सर इधर जो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट है इसमें जो एक्स्ट्रा वो है चीजें जैसे कि ऑक्सीडाइजर टैंक, ये सब उसमें सॉलिड में क्यों नहीं है? सॉलिड में मैं लोग ना, सॉलिड से क्या आ रहा है, सॉलिड में होता है उसमें भी होता है फ्यूल ऑक्सीडाइजर, बट वो दोनों को मिक्स करके एक साथ ऐसा हम सॉलिड का जैसे मोमबत्ती बनाते हैं ना, उसी तरह का बना देते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को दोनों को मिक्स कर देते हैं और एक ऐसा जैसे रॉड टाइप में बना देते हैं, ठीक है ना? तो उसमें में टैंक की जरूरत नहीं है, दोनों को मिक्स कर दिया पहले से ही रॉकेट के अंदर फिट करने से के लिए, और वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है? बट लिक्विड के केस में हम एक साथ नहीं कर सकते, हमें टैंक लिक्विड को कैरी करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा ना कैरी करने के लिए, आप ऐसे नहीं रख सकते हो ना अंदर, तो उसके लिए हम सेपरेट टैंक कैरी करेंगे। और सेपरेट क्यों करते हैं, एक साथ में क्यों नहीं कर देते एक ही टैंक में? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। लिक्विड ऑक्सीजन का -180 होता है, उस पर लिक्विड होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है -250। तो दोनों को आप एक टैंक नहीं रख सकते एक टैंक, यू हैव टू कीप इन सेपरेट टैंक। समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। और कोई डाउट आपका? ओके आयुष बोलिए। सर अगर क्या नाम है हमारा जो रॉकेट है वो स्पेस में है, अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे? रॉकेट स्पेस में नहीं होता है, बस सैटेलाइट होता है। सी रॉकेट इज जस्ट अ व्हीकल, इट विल गो टू सर्टेन हाइट, एक हाइट तक जाता है, उसके बाद उसके सारे पार्ट समुद्र में गिर जाते हैं। समझ रहे हो आप? यस सर। सी अभी आपको मैं बात करूंगा पीएसएलवी में जो जितने पार्ट्स होते हैं, कोस, ये नोज कोन और केसिंग और प्रोपेलेंट, तो आपका जल ही जाता है, तो टैंक बच जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है पता है, एक एक करके अलग हो जाती है आपके रॉकेट से, और धरती में गिर जाती है समुद्र वाले एरिया में। तो रॉकेट डजंट गो लाइक इट विल बी इन स्पेस ओनली। आर यू गेटिंग? ओके सर। In case any technical problem come, definitely it is going to crash. That is what that is. So we are not going to repair the rocket. Okay? सर यहाँ और उसमें क्या नाम है क्या डलता है, जैसे पेट्रोल डलता है इसमें, उसमें पेट्रोल डलता है? नहीं पेट्रोल, सी हाँ मैंने बताया ना, लिक्विड वाला अगर यूज करें तो दो चीजें होता है, फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइज होता है। फ्यूल हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है?
और ऑक्सीडाइजर में क्या यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप फ्यूल हाइड्रोजन लिया, उसको जलाने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा ना, ऑक्सीजन। कोई चीज जलती कब है, जब ऑक्सीजन होती है हमारे पास, राइट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगी, जलेगी नहीं। तो इसलिए हमें ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। इवन फ्यूल में हम केरोसिन भी यूज कर सकते हैं। बट अभी जनरली हमारा जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, जीएसएलवी है, जीएसएलवी का जो तीसरा स्टेज होता है, थर्ड स्टेज, क्रायोजेनिक पे बेस्ड होता है, क्रायोजेनिक इंजन। वो जो मूवी मैंने कल भेजा ना, वो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर ही है, आपको पता है। ओके वो सर। जब हमारा सोवियत संघ जो था टूटा था, ठीक है ना, 19 आई थिंक 80 के आसपास कुछ, तो उस टाइम क्या होता है, 1980 और 1970, आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, जब आपका टूटा था तो ये आपका रसिया अलग हो गया था, बना था रसिया, नया एक वो बना था, राइट। तो उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया में भी काफी क्या कहते हैं, लड़ाई ये चल रहा था, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वॉर और वाला था। तो उस केस में क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स की हमें जरूरत थी, जीपीएस ट्रैकिंग एंड ऑल। तो उस टाइम हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में इतना, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप नहीं हुए थे। तो वी आस्क फॉर, वी वर जस्ट ग्रोइंग ऑन दैट टाइम। तो वी आस्क रशिया to we went like our scientists went to the Russia and learned the cryogenic technology because they have already sent those satellite and at all, they are well equipped with that। तो उनसे हमने सीखा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो हम बोलते हैं ना जीएसएलवी मार्क टू मार्क थ्री, तो जो मार्क टू है, जो जीएसएलवी मार्क टू है, इसमें जो जीएसएलवी का जो मार्क टू मॉडल है, इसमें जो हम इंजन यूज करते हैं वो रशिया वाला इंजन है, ठीक है ना। रशिया ने जो हमें इंजन दिया था, उनकी जो टेक्नोलॉजी है। और मार्क थ्री क्या है, जो रशिया वाला जो इंजन जो हमें मिला था, उसी को थोड़ा सा हमने चेंज किया, इम्प्रूवमेंट करके, तो वो हमारा मार्क थ्री है, ठीक है ना। मतलब कि रशिया से सीख करके हमने बनाया जो अपना इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, उसको मार्क थ्री नाम दिया। उसी को बोलते हैं जीएसएलवी मार्क थ्री। तो मार्क थ्री एक ही चीज है। मार्क टू रशियन मेड है, एंड मार्क थ्री क्या है, इंडियन वर्जन, ठीक है। तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी, जब हम लड़ाई जब छिड़ी थी रशिया और अमेरिका ये सब के बीच में, तो उस समय रशिया ने हमें हेल्प किया था। इसीलिए इंडिया हमेशा रशिया की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम में हुए हैं तो रशिया हमें हेल्प किया है हमेशा। तो फ्रॉम रशिया ओनली एक्चुअली वी गॉट दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यस, तो तीसरा स्टेज जो हमारा होता है जीएसएलवी का, वो क्या होता है, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब किसी चीज को काफी लो टेम्परेचर में स्टोर करना। क्रायोजेनिक में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टैंक। अब जब आपका रॉकेट जा रहा है तो वो तो अलग अलग टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था ना जब शुरुआत में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो आपका रॉकेट अलग अलग टेम्परेचर से होके जाता है। योर टेम्परेचर पासेस टू द, योर रॉकेट पासेस टू द डिफरेंट टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, समटाइम टू बी मोर हीट, समटाइम लो टेम्परेचर। तो यू हैव टू मेंटेन इट इनसाइड द रॉकेट, नहीं तो आपका बर्न हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन जो स्टोर कर रहे हो, वो भी उसके लिए निगेटिव टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं कर पाओगे। नॉर्मल में क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। बट सिलेंडर में जो आपका टैंक है, उसमें किसमें आपने किस फॉर्म में कैरी किया हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। और जो आपका हाइड्रोजन होता है माइनस, के लिए -250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए लिक्विड में रहने के लिए। और जो आपका ऑक्सीजन है, उसको कितना चाहिए, -180 डिग्री, उतना नहीं होगा। तो इसलिए हमें सेपरेट कैरी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। चलिए सर आगे सर, हाँ बोलिए बोलिए। नीचे से जो हीट निकलती है, हम्म, वो पार्ट उसका तो बहुत गर्म हो जाता होगा। यस, दैट्स राइट। इसीलिए तो हमारे पास होता है इंसुलेशन लेयर। गर्म हो जाता है तो हमारी वो जो गर्म हो रहा है वो मटेरियल में ना जाए, वो सिर्फ सीधा इंजन से बाहर निकल जाए। तो हमारा जो होता है इंसुलेशन लेयर होता है, जो क्या होता है, हीट को, जैसे थर्मस का आपका बोतल होता है ना, फ्रीज होता है, अगर उसको आप तोड़ेंगे खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, राइट। वो फॉर्म क्या करता है, हीट को जाने नहीं देता है। अगर पानी ठंडा है तो ठंडा रहता है बहुत देर तक, अगर गर्म है चाय है तो बहुत देर तक चाय गर्म रहती है। ऐसा क्यों होता है, अगर ग्लास में अगर आप चाय रखो, इफ यू कीप अ water and tea in a glass, after some time it will become what, chill, cool, right? Same for hot water also, it will become normal water after what happened। तो जो हीट होता है वाटर में या टी में, that transfer to the atmosphere। बट अगर भाई आप थर्मस बॉटल लेंगे तो उसमें क्या होता है, इंसुलेशन लेयर होती है कि क्या होता है, वो फॉर्म टाइप में होता है। तो वो उसको हीट को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता है। तो इससे क्या रहता है, आपकी चाय थर्मस बोतल में, और जो आपका वाटर है ठंडा रहता है बहुत देर तक, समझे आप। That is यस how सर। the same thing happen when the low, very high temp, 3000 degree centigrade. What is the temperature it goes in the inside the engine? It is almost 3000 degree centigrade. How much it is? Approximate? समझिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 में तो हमारी 50 में तो हालत खराब हो जाती है। अभी अभी हमारा जिस, हम धरती पे जिस टेम्परेचर पे रह रहे हैं, अभी आपके आसपास का वो कितना है, 50 50 डिग्री। डिग्री। और यही हमको इतना परेशान करता है, पसीना निकलता है और बोलते हैं बहुत गर्मी लग रही है। समझिए 3000 कितना होगा,
यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में आपका मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, पता है आपको। तो वी हैव टू यूज वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक इसीलिए इंजन में पता है आपका क्या होता है, जो इंजन होता है वो टाइटेनियम का होता है। किसका होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का। टाइटेनियम, टंगस्टन, there are many high temperature material. You have composites also, composite material which can stand up to very high temperature. ठीक है, इन सब मटेरियल से आपका इंजन का जो है स्ट्रक्चर बना होता है। चलिए डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप ज्यादा खो जाएंगे, मैं नहीं चाहता आप खोएं। ठीक है, ओके, सपनों की दुनिया में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। shall we stop here, shall we continue? Hybrid propellant rocket, guys. Stop. Okay, let me finish this because very small topic. Okay, very easier. Okay. Okay, now what is hybrid propellant rocket, guys? So मैंने कल बताया था आपको, it is a combination, like again propellant hybrid मतलब one will be solid, one will be liquid. समझ में आ रहा है बच्चों? It will be a combination. See, solid propellant में क्या था? Both was fuel and oxidizer, both was in solid form. Liquid में केस में क्या था? Both were in लिक्विड में थे सब। now in hybrid what will happen, you have fuel, you have oxidizer, you have fuel and you have oxidizer. तो आपको पता है फ्यूल क्या होता है? आपका जो फ्यूल होता है, ठीक है, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। फ्यूल क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में। मींस like fuel can be in solid form and oxidizer can be in liquid form, or it will be vice versa, but generally what will happen, fuel will be in solid form and oxidizer will be in liquid form. समझ में आ रहा है आपको? जनरली ये कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा, फ्यूल सॉलिड में और ऑक्सीडाइजर लिक्विड में। तो अगर एक आपका सॉलिड है एक लिक्विड है तो क्या होगा? वो हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट। समझ में आ रहा है बच्चों? हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट। नाउ चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड प्रोपेलेंट। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कैन यू सी एनी एक्स्ट्रा कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट? If you look at the solid and liquid, any new? Yes, sir. What is that? What is the new one? Anyone is new, guys? No, sir. So all are similar to what? All are similar to Solid and Liquid propellant. liquid propellant rocket. So same like parts, components you'll be having. Now you know that what is nose cone. So again, so nose cone I'm not discussing. So we have oxidizer. Now देखिए इसमें कैसे कॉम्बिनेशन होता है पता है आपका? तो आपका जो ऑक्सीडाइजर टैंक होता है, इसमें एक ही टैंक होगा। कितना टैंक होगा इसमें बच्चों? ओनली वन टैंक which will carry oxidizer. एंड ये जो येलो वाला दिख रहा है, इसमें लॉन्ग से ऐसे होता है जिसमें आपका ऐसे आप फिक्स कर दोगे आपका जो रॉड होगा फ्यूल का, ठीक है ना, येलो कलर वाला। तो नाउ ऑक्सीडाइजर टैंक, ऑक्सीडाइजर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। व्हाट इज ऑक्सीडाइजर? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल व्हिच अ फ्यूल रिक्वायर्स टू बर्न। तो ऑक्सीडाइजर क्या होता है? जैसे फ्यूल, किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह फ्यूल को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजर इज वन काइंड ऑफ केमिकल व्हिच हेल्प टू बर्न फ्यूल। और अगर आपको फ्यूल को बर्न करना है तो ऑक्सीडाइजर चाहिए होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजर हम क्या यूज करते हैं? जनरली लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजर्स? लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ठीक है ना? सम ऑफ द लिक्विड ऑक्सीडाइजर्स, व्हाट आर दोस ऑक्सीडाइजर्स? लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और जनरली हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, आपको दिखेगा कॉमन में। ओके, टर्बो पंप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्बो पंप? टू पंप द ऑक्सीडाइजर इनटू द कंबसन चैम्बर, ठीक है। और कंबसन चैम्बर में आपका फ्यूल ऑलरेडी होता है। कंबसन चैम्बर में यू ऑलरेडी हैव अ फ्यूल। नाउ वी हैव फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑक्सीडाइजर, मतलब कितना ऑक्सीडाइजर कंबसन चैम्बर में जाना चाहिए, तो आप वाल्व के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। Now see, this is how the thing is. Can you see that this is the schematic of your this hybrid? दिख रहा है आपको? ये देखिए आउटर केसिंग है, ये टैंक है आपका। टैंक से आपका ऑक्सीडाइजर कहाँ जाएगा? फ्लो वाल्व में जाएगा, वाल्व से कंट्रोल करेंगे। वाल्व के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक वो दिख रहा है आपको, इग्नाइटर दिख रहा है यहाँ पे आपको बच्चों, इग्नाइटर दिख रहा है।
Yes, sir. तो इग्नाइटर से क्या होगा, फ्यूल यहाँ से इग्नाइट होगा, और ये देखिए यहाँ पे आपका सॉलिड की तरह वो स्टार वाला जो था, और ये आपका किसमें है, ये येलो कलर वाले रीजन में, कंबसन चैम्बर में ही यहाँ पे क्या है आपका फ्यूल है। फ्यूल फ्यूल को किसमें लगा दिया गया, फिट कर दिया गया है यहाँ पर कंबसन चैम्बर के अंदर में। तो कंबसन चैम्बर में ही फ्यूल होता है। ये एक डिफरेंस होता है आपका क्या, जो आपका सॉलिड प्रोपेलेंट है वो फ्यूल जो होता है वही कंबसन चैम्बर होता है। तो यहाँ पे कंबसन चैम्बर में ही फ्यूल को रख दिया गया है। और फिर यहाँ पे क्या होगा आगे, इस तरह का सेटअप करने के बाद ऑक्सीडाइजर आपका कंबसन चैम्बर दिख रहा है आपको, रेड कलर का ड्रॉपलेट दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, यस सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे छोटी छोटी बूंदे दिख रही होंगी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। So that is what oxidizer is coming from the turbo pump, and it is going to the through the valve, and then it is going to the injector. From the injector it is going to the combustion chamber. That is what, in the combustion chamber you have the fuel in the solid form, and then what will happen, we have the spark, we have the what, this is actually spark plug, the small droplets are coming, and then find like here actually, okay, here what will happen, fuel injector, it is actually fuel injector. What it will do, it will convert fuel oxidizer into small droplets, then sprayed inside the combustion chamber, and then we have a igniter, then we have a igniter which will generate the spark. So now next nozzle, that is CD nozzle, conversing diverging nozzle, it expand and accelerate the combustion gases. येलो कलर देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसा है, एक तरफ इसका एरिया क्या है, छोटा है, एक तरफ क्या है, देख पा रहे हैं आप, इधर छोटा है, इधर एरिया क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को बढ़ाने और कम करने का काम करता है। मीन्स again that heat energy converted into the kinetic energy. Now see, this is how the things work. Can you see that guys? आपका oxidizer क्या हुआ, your oxidizer start to move to the turbo pump. So with the help of turbo pump, liquid oxidizer is pumped into the combustion chamber. Oxidizer start to move, it goes to the turbo pump. From there it will go to the control valve. From there how much amount we want, we will open the valve, then it will go to the fuel injector. You can see that. So it will convert into the small droplets. After converting in small droplets, what will happen, what will happen, you can see that we have a igniter inside the combustion chamber. So it will generate the spark, and you have as oxidizer and fuel. So what will happen, your fuel and oxidizer will start to burn. What will happen then, fire will happen in the combustion chamber. You can see that fire is happening, right? Can you see that? Now fire is happening. Can you see that guys? Fire is happening. Now when fire will happen, it will not go in this direction. Which direction it will not go? In the direction of red color. Can you see that? Why it will not go? Because we have the insulation layer. It will not go because of the insulation layer. It will not go in this direction. It will go in only in this direction. Heat. So it will come out from the nozzle. It will come out from the nozzle. So gases will come out with very high velocity, as we know, because nozzle, the purpose of the nozzle is, what is the purpose of nozzle? To increase the speed or velocity, whatever the hot gases are coming out. So like that, what will happen? Your gases will start to come out, and again the same action, as a action, Newton's third law, action will be what? This fire is, hot gases are coming out. Can you see that guys? These gases are coming out back. So what is the reaction? This is action. So what is the reaction? Equal and opposite reaction. What will happen? In the this direction, forward direction. And that is how rocket will move forward. Is it clear? Yes, sir. I will come to the doubt. Let me complete. And please raise your hand if you have doubt, guys. Okay. So can you see that, guys? Gases are coming out. Now engine is fit into the, like your, this is a space vehicle actually. You can see here, in future you will find out like this. So now gases are coming out in this action. So reaction will take place in the forward action. And that is how the aircraft or your rocket will go in the forward direction. And that is how the rocket moves. Oh, it's not getting open. Okay, so that is all about hybrid propellant rocket. Now let's talk about advantages and disadvantages. So what is the advantage? It is simple, it is safe, low cost, and thrust throttling over both sides, solid, propellant and liquid. So here यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो. अगर वॉल्व को आप बंद कर दोगे, ऑक्सीडाइजर जाएगा नहीं, तो फ्यूल जलेगा नहीं. If you close the valve, oxidizer will not go inside the combustion chamber,
and burning will not take place. And then what will happen? You can control it. When you open the valve, oxidizer go, fire will occur, and then what will happen? You can control your fire, that what is the combustion is happening. And that is how you can control the force which is generating in the forward direction. Disadvantage is some residual propellant usually left. तो इसमें क्या होता है, आपका कुछ चीज जो होता है, फ्यूल जो प्रोपेलेंट है, मतलब फ्यूल या ऑक्सीडाइजर बच जाता है. तो एक्चुअली जनरली हमें बचाना कुछ नहीं होता है, पूरा खत्म करना होता है, इसमें बच जाता है. एंड डिफिकल्ट टू रिलाइट, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिलाइट. अगर आपको इसको फिर से मतलब कि रिकंस्ट्रक्ट या रीअरेंजमेंट करना है तो इट विल बी डिफिकल्ट. नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिड प्रोपेलेंट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैंने बताया था आपको एक STPB शुरुआत में, याद है आपको, डबल बेस में, उसमें सॉलिड में. तो एक्चुअली STPB जो होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये आपका हाइब्रिड प्रोपेलेंट का टाइप होता है. ओके, लाइक इट इज अ सिंथेटिक रबर एक्चुअली. ओके, so this is the thing. So this is the one of the common fuel used in the hybrid propellant rocket. What is the common fuel used in hybrid propellant rocket? STPB. And what is the common oxidizer? Liquid oxygen, nitrous oxide, hydrogen peroxide. This is the common as your liquid engine. So only the thing is common fuel used in this hybrid propellant rocket is STPB. What is that? Hydroxyl terminated polybutadiene. Okay. Another this common fuel is plexiglass. It's acting plexiglass. Okay. So you can see liquid fuel options are kerosene, hydrogen, liquid. LS2 means, what is LS2? Anyone idea? It is liquid hydrogen. What is that? Liquid hydrogen. You know, ये लोग कैसे लिखते हैं? LOX. You know, ऐसे लिखेंगे आपको टेक्निकल भाषा में. अगर आप लॉन्च और रॉकेट देखोगे ना, जो इसरो और नासा, उसमें ऐसे लिखते हैं लॉक. क्या लिखते हैं? LOX. You know what is the meaning of LOX? Liquid. What is the meaning of LOX? Liquid oxygen. LOX मतलब liquid oxygen. LOX means Sir, LOX. The meaning of this is liquid oxygen. oxygen. सर Yes. सर ट्यूशन आने का टाइम हो रहा है. हाँ, आप जा सकते हो. LS2 ओके सर. पता है, LS2 भी लिखते हैं यहाँ पर. तो क्या होता है LS2? लिक्विड हाइड्रोजन. व्हाट इज LS2? लिक्विड हाइड्रोजन. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपको. तो आपको जब कभी भी ऐसे दिखे तो आप पहचान पाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LOX, LOX and LS2. Will you able to identify? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is what for today, guys. In tomorrow's session, we will talk about SLVs. What we'll talk about? SLV. What is SLV? It is a type of rockets. No, it is satellite launch vehicles. Okay. For rockets, we use general word in technical terminology. SLV, satellite launch vehicles. Okay. Okay. Now session is open for the question and answer. Sir, first because I have go to school, tuition. Okay. Yes, sir. Sir, there was a battery to create electricity to spark. So this happened like on the ground station. That you will be having, somebody will be there in the ground station when the rocket is standing on the launch pad. It will be connected with some wire. Okay. And it will be some button will be there. You can check it. Okay. It will be on the ground. Yes, sir. Wire. Like that. Also, जो रॉकेट होता है, जैसे उसका वो डिफ्लेक्ट हो गया है या फिर उसमें कमी आ गई है और वो किसी अदर मतलब किसी जगह पे गिरने वाला है जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सर हम क्या उसे तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं हवा में? रॉकेट को नहीं खत्म कर. रॉकेट we cannot do that. We cannot do that. It is not. It is like unguided. Rocket is unguided. एक बार हमने लॉन्च कर दिया, कहाँ जाएगा पता नहीं है. ठीक है. So if it is failure, it will fall somewhere. We cannot do anything. अगर आप उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो और ज्यादा वो हो जाएगा, उसके टुकड़े गिरेंगे इधर उधर. It's better not to destroy. That is it. If it is height, it's fine, but generally that doesn't happen. Okay, sir. But generally, see, if it is if it is a failure, it will fall onto the sea coastal areas. So no issue with that, because we launch generally rockets from the near to the seas area and toward the direction of sea. So it will fall in Hind Mahasagar and your Bay of Bengal like that. Yes. Next question.
Sir, can I leave? Yes, you can leave it. Guys, please do ask question if you have. No doubts, no questions, guys. Okay, then let's go to the what we have learned today. Who is coming forward? What we have learned today? Yes, what we have learned today. आज हमने क्या सीखा? No one is speaking, no one is coming forward. Guys, you should come forward, right? आपने कुछ नहीं सीखा आज? You haven't learned anything. Okay, so we'll just conclude the session here. Then we'll meet you tomorrow. I'll see you tomorrow. Have a nice day, guys. See you tomorrow. Have a Bye bye. nice day, Take care. sir. Bye, sir. Bye bye, sir. Bye.